हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। आज हम देखने वाले हैं सैनिक स्कूल का जो एक पेपर जो कि तुम्हारा रिसेंट 5 अप्रैल को हुआ था। 5 अप्रैल को हुआ था जो कि सैनिक स्कूल का एग्जाम, मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 8th वाले बच्चे 9th को जाने के लिए जो सैनिक स्कूल का एक एग्जाम हुआ था। आज मैं तुम्हारे लिए एक पेपर लाया हूँ जो कि इंग्लिश मीडियम बच्चे अपियर किए हैं, जो मतलब इंग्लिश पे लिखा है, जो पूरा का पूरा है 32 पेज क्वेश्चन है, 150 टोटल क्वेश्चन है। मैं तुम्हारा पूरा का पूरा 150 का आंसर बताऊंगा। ये तुम्हारा फुल वीडियो तुम्हारा आंसर की है। सो वीडियो को विथआउट स्किप करके तुम वीडियो को एंड तक देखो और तुम्हारा स्कोर तुमको पता लग जाएगा कि तुम्हारा कितने स्कोर आने वाला है 150 में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। ओके, सो विथआउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो देखो, पहला क्वेश्चन जो है ये तो तुम्हारा जो फ्रंट पेज था, सेल वाला ये पेपर है। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है जो तुम्हारा है मैथमेटिक्स का, जो दिया है इन द एबव फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट। द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट। सो तुम्हारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या होगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 20। ओके, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 20। नेक्स्ट नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है in the given figure FD parallel to BC parallel to AE, BC parallel to AE and SC parallel to ED. So what is the value of x? So x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 67 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राहुल walks 12 meter towards the north from his house and turns west to walk the 35 meter to reach the market. While returning, he walks diagonally from the market to reach back to his house. The distance he traveled while returning is what? So तुम्हारा जो 3 नंबर उसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 37 मीटर। क्या हो जाएगा 37 मीटर। Next question, the sum of 300 is divided between A and B such that twice of A share is less than 3 times B share by the 300. B share is 120। देखो, ये पूरा का पूरा मतलब सॉल्यूशन के साथ में तुम्हारा निकाला हूँ। मतलब मैं तुमको आंसर की बताने वाला हूँ। अगर पूरा का पूरा एक्सप्लेन वीडियो तुमको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, सर हमको एक्सप्लेन वीडियो चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। Next questions. The perimeter of a rectangle is 250 centimeter. If the length is increased by 10% and its breadth is decreased by 20%, the perimeter remains the same. The length and breadth of the original rectangle respectively क्या है 80 meter and 40 meter. Next. A man bought a refrigerator for the 15,200 and spent 300 as a labor charge. 300 as a labor charge. And 500 for its transportation. At what price should he sell it to make it gain the 15%? So answer क्या हो जाएगा तुम्हारा 18,400. Okay. Next question. 7th question. In a city of 40% of the adults are uneducated while 85% of the children are educated. If the ratio of the number of adults to that of the children is 2:3, then what percentage of population is educated? क्या हो जाएगा तुम्हारा 75%. ओके, नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 दिया है फॉर ऑल रैशनल नंबर x and y, x minus y equal to y minus x. For all rational number x and y and z, x plus y into y into z equal to x plus y into x plus z. So उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। स्टेटमेंट 1 is false and statement 2 is true. Okay, next question. A man dig a trench in the 12 days and B can dig it in the 16 days. B can dig it in the 16 days. If there is a big trench working together and get the sum of 5,800 for it, then the share of A in the sum is what? क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर 2,400. Okay. Next, a wire of length 88 centimeter is bent into the shape of a circle and then into the square. Which figure encloses more area and by how much? सो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा सर्कल बाय 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
There is a circular garden and a path turns outside it along its boundary. A man walks around it only once keeping close to the edge. His each step is 66 centimeter long and he takes exactly 400 steps to go around the garden. The diameter of the garden is what? 84 meter. Okay, next. A train runs between the two stations A and B. A and B. Sorry. देखो, a train runs between two stations A and B. While running from A to B, its average speed is 60 km per hour. And when the running from B to A, its average speed is average speed is 90 km per hour. The average speed of the train during the 2 ways journey is 75 km per hour. Okay, next. The weight in the kg of 8 children are the 13.4, 10.6, 12.7 and 17.2, 15, 16.5, 9.8. Their median weight is what? Their median weight is what? Their median weight is 13.85. Okay, next question. The surface area and the volume of the cube are numerically equal. Then the outside of the cube is what? Then the side of the cube is then the side of the cube क्या हो जाएगा? Then the side of the cube is 6 unit. क्या हो जाएगा? 6 unit. Next questions. Which of the following option is the top view of the below the given figure? So उसमें से मतलब जो ये फिगर दिया है उसका टॉप व्यू क्या हो जाएगा? उसका टॉप व्यू हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन डी, मतलब डी नंबर का. डी नंबर मतलब ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 2 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 16 number question. For the following bar graph represent the manufacture of cell and item by the farm of in the 4 month. कुछ दिया है. Total sale during the given month is what percent the total manufacturing during the month. So आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 72%. Okay, next. Suresh earns 72,000 per month. Distribution his family earning by the percent presented of the following pie chart. How much money he spend on the household's expenditure every month? So आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 28,800. Okay, clear. Next question. Find the area of the closed figure ABCO where A of 03, B of 43 and C of 40 and O is the origin. So उसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 unit square. Next, 4 times the area of a curved surface of the cylinder is equal to 6 times the sum of area of its bases. If its height is 12 centimeter, then its curved surface area corrected to 2 decimal places is, so उसका आंसर क्या हो जाएगा? 603.43. Okay, next question. The cost of a tilling the 24 meter wide rectangular plot is 3,900. If the rate of tilling 25 rupees per square meter, then the length of the plot is 65 meter. Okay, next question. A square of side 60 meter and a rectangle of length 80 meter have the same perimeter. The difference of their area is 400 meter square. Okay, next. 22 number. By what number should the minus 8 to the power minus 3 be multiplied so that the product is equal to 6 to the power minus 3? So तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 to the power 3 into 3 by 3 to the power 3. Okay, next. If the following 3-digit number values A and B are B कुछ दिया है, so उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा A equal to 9 and B equal to 1. Okay, next. A 3-digit number 2A3 is added to the number 326 to give a 3-digit number 5B9, which is divisible by 9. The value of B minus A is what? 2. Value of B minus A is 2. Okay, next question. 25. Bina bought a 160 kg apples at 50 rupees per kg. She sold 70% of the apple at 70 rupees per kg and the remaining at 35 rupees per kg. Bina's gain percentage as the whole is what?
business gain percent hold is 19%. Okay, next question. A is to B is to C is 1 by 3 is to 1 by 6 is to 1 by 9. Then the value of a square plus b square by b square minus c square is 9. ओके, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 27. The marked price of an article is 1500. A shopkeeper gives a discount of 5% and still makes a profit of 25%. The cost price of the article is 1140. Okay. In a camp with 200 person, there is enough food for the 42 days. And how long the food will last if 40 more person join the camp on the fast day? So answer क्या हो जाएगा? 35 days. Next question. Study the following tables carefully and choose the correct option. So table A and table B दिया है. So उसका आंसर क्या हो जाएगा? So उसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा option 2. In both tables A and B, X and Y are not in the direct proportion. Next, which of the following vary the inversely? So तुम्हारा आंसर हो जाएगा option 4, speed and time taken. Okay, next question. 5 balls begin to toll together and toll again in intervals of 6, 5, 7, 10 and 12 seconds respectively. How many times will they toll together in 1 hour excluding the one at the start? So आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा 8 times. Okay, next question 32. Read the following statement carefully and choose the correct option. So statement 1 दिया है तुम्हारा. Statement 1 दिया है, number of the form 3n plus 2 will leave remainder 2 when the divided by 3. Statement 2 दिया है, if n upon dividing by the 5 leaves the remainder 3 and n upon dividing by the 2 leaves remainder 0, then n upon dividing by 10 leaves the remainder 4. is तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4. स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false. Okay, next question. Next, statement 1. Triangle is a polygon whose sum is the exterior angles is double the sum of its interior angles. Statement 2. If the sum of the interior angle of a polygon is double the sum of its exterior angle, then it is hexagon. Statement 3. If the interior angle of the triangle are in the ratio 1 is to 2 is to 3, then the ratio of the exterior angle is 3 is to 2 is to 1. So तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? All statement 1, 2, 3 are false. Next तुम्हारा 34th. A man can do a piece of work in 16 days. The number of men required to do double the work in 8 days is what? So तुम्हारा 34 का आंसर हो जाएगा 28. Next, a jar contains 6 red, 5 green, 4 blue and 5 yellow marbles. 5 yellow marbles of same size. What is the probability of red color marble is chosen at random? So तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 by 10. Okay, next, a bag contains 16 cards bearing a number from 1 to 16. One card is chosen at random. The probability that chosen card bears the prime number is what? 3 by 8. तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 by 8. Next, 37th question. The average height of the 30 boys was calculated to be the 150 centimeter. 150 centimeter. So, 150 centimeter. It was found later that for one boys is 165 centimeter wrongly copied as 135 centimeter. During the computation of the average, the correct average is what? 149 centimeter. Next, a polygon has 40 faces, 60 edges. The number of the vertices of the polyhedron is क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा 22. Next, the population of a city was 66,150 in 2005. If the populations increased at the rate of 5% per annum, then the population in 2003 was 60,000. Answer क्या हो जाएगा? 60,000. Next, 40. The sum of money invested at 8 whole 1 by 3% per annum simple interest amounted to be the 2,475 in 1 year 9 months. What will be the amount of 2 years in the 5% per annum? 2,160. Next,
For the given figure, which of the following is true? Which of the following is true? So तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1. नेक्स्ट 42 नंबर दिया है एक मतलब कैलकुलेशन करने के लिए, उसका आंसर हो जाएगा 7. नेक्स्ट, द लीस्ट स्क्वायर नंबर which is the exactly divisible by 3, 4, 5, 6 and 8 is 3600. Okay. Next, the difference of two number is 988. If the cube root of the smaller of the two number is 7, then the cube root of the larger number is what? 11. Cube root of the larger number is 11. Next, 45 questions. The lateral surface area of a cube is 256 centimeter square. The volume of the cube is what? The volume of the cube is 512. क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? हो जाएगा 512. Okay. Next question. In the figure, diagonals AC and BD of a parallelogram ABCD intersect each other at a point O such that angle DS equal to 45 degree, AOB equal to 110 degree. The measure of angle DBC is 65 degree. Okay. Next question. If the length of a rectangle is 2 by 3 a square plus 2 by 9 meter and its breadth is a square plus 1 by 6 meter, then the area of the rectangle in meter square is option 1 हो जाएगा 2 by 3 a fourth plus 1 by 3 a square plus 1 by 27. Next, a wall of length 5x plus 2, 5x plus 2 unit of height 6x unit has a square window of side 2x unit and door of width 2x unit and height 3x unit. Which of the following algebraic expression gives the area of a wall to be painted? So तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 4x into 5x plus 3. Next question. If the height of a triangle is 4x square plus 6 unit and the base that of a triangle is 3x square minus 4 unit, then the area of the triangle in square unit is 6x fourth plus x square minus 12. Next, what should be added to the 4c into minus a minus 2b plus c to obtain the 3c into a minus b plus c minus 2c into a plus b minus c is 4ac plus 3bc plus c square. ओके. नेक्स्ट, सो ये था तुम्हारा 50 मैथ क्वेश्चन. देन उसके बाद आ जाता है तुम्हारा इंटेलिजेंस जो कि रीजनिंग क्वेश्चंस. देखो उसको भी मैं तुम्हारा पूरा का पूरा 150 क्वेश्चंस जो कि मैथ रीजनिंग मैथ इंटेलिजेंस और रीजनिंग, उसके बाद जो तुम्हारा साइंस एसएसटी सॉरी इंग्लिश साइंस एसएसटी पूरा का पूरा सभी का सभी क्वेश्चन करूंगा तुम्हारे लिए. नेक्स्ट, चूज द नंबर ग्रुप व्हिच इज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. ऑप्शन 1 हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगरल सीरीज. सो कौन सा होगा तुम्हारा क्वेश्चन मार्क? अगर हटा देंगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2. क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 3 वाला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर. मतलब उसका मिरर इमेज क्या होगा? सो उसका मिरर इमेज क्या होगा? ऑप्शन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 होगा. क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. ओके. नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज 1 2 3 5 8 दिया है. सो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा 34. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग लेटर नंबर सीरीज 3f 6g 11i प्लस 18L. सो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 27p. नेक्स्ट क्वेश्चन, देर इज ए सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वर्ड्स ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द, मतलब कुछ दिया है थर्मो, मतलब जो जो कि प्रोपोर्शन दिया है. थर्मोमीटर जैसे कि टेम्परेचर होता है उसके जैसा ओडोमीटर क्या हो जाएगा? तुम्हारा स्पीड हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट 4 डिजिट नंबर. सो उसको स्टडी करने के लिए है इट्स 10 प्लस इज डिजिट इज 5 लेस देन द डिजिट ऑफ 1 प्लस. अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे सो उसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? सो उसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 1 7438. नेक्स्ट, 58th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स. सो उसका आंसर क्या हो जाएगा? रेन. क्या हो जाएगा?
rain. Next, complete the following analogy. DE is 9 and sorry double is to FG is to क्या हो जाएगा तुम्हारा 13 हो जाएगा. Next, arrange the following in the logical and meaningful order. Okay, so दिया है डॉक्टर, रिकवरी, इलनेस, कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, ये सब कुछ दिया है. सो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 CADEB. नेक्स्ट तुम्हारा हो जाएगा 61. हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर. अगर उसको काउंट करोगे तो कितना ट्राइंगल आ जाएगा? तुम्हारा आ जाएगा 10 ट्राइंगल. क्या आ जाएगा? 10 ट्राइंगल. ओके, ऑप्शन 4. नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. सो उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है उसका मिसिंग टर्म्स कौन सा होगा? ऑप्शन 1 CCBBAA. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 63. Dikshita is making the given calendar of the bulletin board. Which day of the week should be the 25th January 2000 x to 20XX. So उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा थर्सडे. क्या हो जाएगा? थर्सडे. नेक्स्ट, a set of figure carrying the certain numbers of the given जो दिया है नंबर इज ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग द सिमिलर पैटर्न बेस्ड ऑन द पैटर्न्स फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. सो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 17. क्या हो जाएगा? 17. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग फिगरल सीरीज. सो क्वेश्चन मार्क के बदले कौन सा हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. ओके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेट्रेन कोड इफ द pedestrian equal to 30, accident equal to 24 and driver equal to 18, then the traffic equal to क्या हो जाएगा? 21. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल एंड 1 शार्पनर इज 25 रुपीज, द कॉस्ट ऑफ 2 शार्पनर्स एंड 2 इरेजर इज 14 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर इज 9 रुपीज, देन द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज क्या हो जाएगा? 7 रुपीज. ओके, वन आंसर हो जाएगा 7 रुपीज. नेक्स्ट, हाउ मेनी वेज कैन मिस्टर एक्स रीच इज होम. सो क्या आंसर क्या हो जाएगा? 8. आंसर क्या हो जाएगा? 8. नेक्स्ट क्वेश्चन 69. अनीता इज ओल्डर देन चेतना, बबीता is older than Chetna but younger than Anita. Eric is younger than Divya and Chetna. Chetna is older than Divya. Who is in the middle of respect to their ages? So तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? Chetna. Okay. Next, arrange the following words as per the order of the dictionary. So डिक्शनरी ऑर्डर पे अगर हम अरेंज करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 BECAD. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर पेयर. सो उसमें से कौन सा मिसिंग नंबर पेयर होगा? सो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 13, 17. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग टर्म्स. सो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? IFC. नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी. सो उसमें से कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3:10, 3:30, 6:6 7 350 346. सो आंसर हो जाएगा 219. नेक्स्ट, इफ द कोड राइट इज SJHIU देन व्हाट इज द कोड ऑफ FINDS. फाइंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन C GJOET. Next, in the following arrangement of the letters, how many G's are there? Which of the how many G which of the followed the K preceded the N? A K ऐसे कुछ दिया है सीरीज. तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 2. ओके, नेक्स्ट तुम्हारा हो जाएगा दिया है इंग्लिश. तुम्हारा 25 का जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन खत्म हो गया है. नेक्स्ट तुम्हारा इंग्लिश का 25 क्वेश्चन आएगा. ओके, it was such foolish decision to accept dash impossible task. तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? AA. नेक्स्ट, चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. ब्लिक. सो तुम्हारा ब्लिक का क्या हो जाएगा? ब्लिक का हो जाएगा ग्लूमी. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब. सो एप्रोप्रिएट एडवर्ब क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा फॉर्चुनेटली डैश वी एस्केप्ड ऑन हॉट. ओके, नेक्स्ट, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पासिव वॉइस. सो पासिव वॉइस पे अगर हम कन्वर्ट करेंगे योर बिहेवियर अनॉयड मी. सो उसका आंसर क्या हो जाएगा?
I was annoyed at your behavior. Okay, next question. Fill in the correct adverb from the following option to make a meaningful sentence. We cannot play music days in this park. So answer क्या हो जाएगा? Loudly. Next, change the given sentence into indirect narration. So indirect narration, Pawan said how beautiful is the scene is, sorry, how beautiful the scene is. So answer क्या हो जाएगा? Pawan exclaimed the scene was very beautiful. Okay, scene was very beautiful. Next, तुम्हारा 82 से लेकर जो तुम्हारा ये एक पैसेज है, सो पैसेज जो तुम्हारा 82 से लेकर लाइक 82 से लेकर तुम्हारा 86 तक, मतलब 5 क्वेश्चन तुम्हारा पैसेज दिया गया है. सो पैसेज को तुम खुद पढ़कर करोगे. ये तुम्हारा पैसेज है, पैसेज तुम खुद पढ़कर करोगे. मैं डायरेक्ट तुम्हारा स्टार्ट करता हूँ 87. ओके, 87. सो 87 का आंसर, 87 का क्वेश्चन क्या दिया है? ऑर्गेनाइज द पार्ट ऑफ द मीनिंगफुल सेंटेंस देन आई एक्सपोर्टेड. अगर उसको ऑर्गेनाइज करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? DBCA. मतलब द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वाज रेदर वर्ड्स देन आई एक्सपेक्टेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. अबैंडन. अबैंडन का तुम्हारा ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? कंटिन्यू. क्या हो जाएगा? कंटिन्यू. नेक्स्ट 89. स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस. सो तुम्हारा फॉलोइंग, इसका एरर कौन सा है? मी दैट. सी आस्क्ड मी दैट नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट 90 नंबर. चेंज द गिवन सेंटेंस टू डायरेक्ट नरेशन by choosing the option. Okay, he said that the मंगल would be working hard. So उसका आंसर क्या हो जाएगा? He said मंगल will be working hard. नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव मोस्ट. मोस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? मोर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट चॉइस. आई रोट ए लाइन ऑन द सैंड विथ ए डैश दैट शी कुड नॉट डैश बिफोर वेब्स ऑफ द वास्ट डे अवे. सो ऑप्शन 2 हो जाएगा REED एंड READ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Choose the correct items from the blanks. Mediocre artists like the Sina are found dash. Sina are found dash. क्या हो जाएगा? A dime, a dozen. A dime, a dozen. Next, choose the appropriate question tag. We are going to movie tonight. So we are going to are not we. So answer क्या हो जाएगा? Are not we. Next 95. फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. सो उसमें से जो मतलब दिया है 1, 2 और 4 इनकरेक्ट है, तुम्हारा 3 करेक्ट स्पेलिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन. चेंज द जेंडर ऑफ द सेंटेंस. ही इज ए फादर एंड ए टीचर. ही इज ए फादर एंड ए टीचर. सो क्या हो जाएगा? सी इज ए मदर एंड ए टीचर. नेक्स्ट, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम passive voice to active voice. So question is by whom was this beautiful glass broken? So तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? Who broke this beautiful glass? Next questions. Choose the appropriate word for the blank to the complete the sentence. Today is the best day of my life. Nothing seems to go as planned. So क्या हो जाएगा? Worst. Next, choose the word opposite in the meaning of permit. जो अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द परमिट क्या हो जाएगा? प्रिवेंट. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस. सो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा येट. क्या हो जाएगा? येट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट तुम्हारा इंग्लिश खत्म हो गया. नेक्स्ट तुम्हारा है 25 साइंस का क्वेश्चंस. ओके, सो साइंस का क्वेश्चंस. ट्रीमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस इन द डेज ऑफ अर्थ. तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉस्ड. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड द डैश वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू. नेक्स्ट, तुम्हारा 103 नंबर दिया है. गोल्ड क्या हो जाएगा? तुम्हारा गोल्ड हो जाएगा ज्वेलरी. नेक्स्ट, तुम्हारा आयरन क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा मशीनरी. नेक्स्ट, मर्क्यूरी क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी हो जाएगा तुम्हारा थर्मोमीटर. देन कॉपर हो जाएगा इलेक्ट्रिक वेव्स. सो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन डी. क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4.
नेक्स्ट क्वेश्चन, the force exerted by a magnet the force exerted by a magnet is an example of non-conductive force. Next, which of the following not a kharif crop? कौन सा mustard? Next question, which of the following may not be cause HIV virus from the infected person to the normal person? क्या हो जाएगा? Shaking a hand with an infected person. Okay. Next question, the major component compressed natural gas CNG is methane. Next, combustion is the chemical process in which the substance react with and produce heat is oxygen. Okay. Next question, which of the following is not a part of the animal cell? सो उसमें से कौन सा एनिमल सेल है? साइटोप्लाज्म एनिमल सेल नहीं है. साइटोप्लाज्म तो है, न्यूक्लियस तो है, सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल प्लांट का है. ओके, सो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सेल वॉल. नेक्स्ट, द एनिमल विच गिव द बार्थ टू द यंग वंस आर कॉल्ड डेस. क्या हो जाएगा? भीवी पुरुष. जो कि एग देते हैं वो भी पुरुष, जो कि बेबी बॉर्न करते हैं भीवी पुरुष. नेक्स्ट, special shapes are given to the object moving to the fluid is minimize fluid friction. Next, identify the measures used to limit the noise pollution. So noise pollution आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? मतलब ABCD दिया है. मिनिमाइज द यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स, प्लांटिंग ट्रीज along the roads, installing silence devices is the aircraft engine, cutting trees around the residential buildings. So तुम्हारा आंसर हो जाएगा A, B and C. Okay. Next, image formed by the plane mirror is कौन सा आंसर हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन 4 virtual behind the mirror and the same size as the object. Next question तुम्हारा, which of the following is the most reactive with water? उसमें से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव विथ वाटर? सोडियम. ओके. नेक्स्ट, सो उसको केरोसिन पे केप्ट करके रखा जाता है उसकी वजह से. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टिंग सोल्यूशन, क्या होगा? बबल्स ऑफ द गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स या डिपॉजिट्स ऑफ मेटल मे बी सीन इन द इलेक्ट्रोड्स. देयर इज द नो चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन या चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन मे ऑकर. सो आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 1 A, B and D only. Next, which of the following hormones helps our body to adjust the stress when one is very angry, embarrassed or worried? So answer क्या हो जाएगा? Adrenaline. Next question, the method of preparing compost the help of red worm is called क्या हो जाएगा? vermi composting. Next, the variety of organism existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment is called biodiversity. Okay. Next question, which of the following is the first reserve forest of India? क्या हो जाएगा? सतपुरा नेशनल पार्क. Next, many young people get acne and pimples on the face during the adolescence due to तुम्हारा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? increased activity of sebaceous gland. Next, तुम्हारा मैच द फॉलोइंग. सो मैच द फॉलोइंग क्या हो जाएगा तुम्हारा? सैटेलाइट दिया है, सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सैटेलाइट हो जाएगा मून, कॉन्स्टलेशन हो जाएगा कैसियोपिया, कॉमेट हो जाएगा तुम्हारा हैली एंड स्टार हो जाएगा तुम्हारा सीरियस. सो तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A. नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट गैसेस इन द एयर इज different gases in the air is what? 78% of nitrogen, 21% of oxygen and other gases. Next, which is not a naturally occurring greenhouse gas? So उसमें से यहाँ पर ही दिया है क्या? इथेन. क्या दिया है? इथेन तुम्हारा नहीं होगा. ओके. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉलम में विद देयर कॉलम बी. सो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर? बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस, राइजोबियम हो जाएगा फिक्सिंग नाइट्रोजन, प्रोटोजोआ हो जाएगा मलेरिया एंड वायरस हो जाएगा तुम्हारा एड्स. सो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स एज. सो 4 मेजर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड algae. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा 25 साइंस क्वेश्चन खत्म हो गया. नेक्स्ट लास्ट 25 सोशल साइंस का है.
which of the following is in the example of marine based diversity? So marine based diversity क्या हो जाएगा तुम्हारा? marine based diversity हो जाएगा sea food processing. Okay, next question. Which article of the constitution Indian states that the practice of untouchability has been abolished? Article 17. Next question. Which country is the largest producer of bauxite in the world? Answer हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन लिस्ट टू. सो तुम्हारा दिया है दीवान. दीवान क्या हो जाएगा? दीवान हो जाएगा फाइनेंशियल ऑफिसर, बख्शी मिलिटरी पेमास्टर, फौजदार मिलिटरी कमांडर, कटवाल पुलिस कमांडर. सो सही से मतलब सीधा सीधा ही दिया है. सो ऑप्शन 3. नेक्स्ट. The full form of CITES. The full form of CITES is what? Full form of CITES is the Convention of International Trade and Endangered Species. Next question. The power of judiciary to strike down the particular laws passed by the parliament if it believes them to be the violation of the basic structure of the consultation is judicial review. Okay. Next question. Which one of the following statement is not correct about the ग्राम सभा? सो उसमें से कौन सा ग्राम सभा के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है? सो क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? ऑप्शन 3. द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम सभा. नेक्स्ट तुम्हारा 133 क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सो उसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? So public facility relate to the public people's basic needs. Public facilities are only for those who can afford them. The responsibility to provide the public facility lie with the government. The responsibility to provide the public facility lie with private companies. So तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा A and C only. Okay. Next तुम्हारा questions 134. The Ibn Battuta, a 14th century travelers who was from which of the following countries? So आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? सॉरी, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोरक्को. क्या हो जाएगा? मोरक्को. नेक्स्ट. According to the Constitution of India, there are dash organs of the government. So how many organs of the government? There are 3 organs of the government. Okay. नेक्स्ट. which of the following is a method for the conservation of land resources? सो उसमें से कौन सा conservation of land resources? afforestation. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. which of the following is not a feature of shopping complex? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. सो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द ट्रेडर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल. नेक्स्ट क्वेश्चन 139. Then which of these is not a function of a municipal corporation? So उसमें से कौन सा municipal corporation नहीं है providing the defense service? Next question तुम्हारा है 140. Sahara is the world's largest desert is located in which of the following continents? Africa. Next. which of the following is not a factor of soil formation? So उसमें से क्या हो जाएगा? precipitation. Next तुम्हारा है which crop is also known as golden fiber? So golden fiber क्या है? गोल्डन फाइबर तुम्हारा जूट. नेक्स्ट क्वेश्चन. गांधी जी कैरिड द दांडी मार्च टू अपोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सॉल्ट लॉ. नेक्स्ट. द लास्ट मुगल एम्परर वाज बहादुर शाह जाफर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एम्प्लॉयमेंट of the manual scavengers of the construction of a dry latrines act was passed by the government of India in which year? 1993. Okay. Next question. The difference between the birth and death rate of the country is called the natural growth rate. Okay. Next question. which of the following is the renewable resources? So उसमें से कौन सा renewable resources है? solar energy. Next question. The book title अमर जीवन was written by कौन लिखे? रसुंदरी देवी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL? PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द आज़ाद हिंद फौज वाज रेज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस. ओके. सो ये था तुम्हारा 150 कंप्लीट क्वेश्चंस जो कि तुम्हारा सैनिक स्कूल का है. सैनिक स्कूल का यहाँ मतलब ये कि उड़ीसा भुवनेश्वर सैनिक स्कूल का एक एंट्रेंस पेपर था जो कि मैं तुम्हारा 150 से 150 क्वेश्चन किया. सिर्फ तुम्हारा जो इंग्लिश का पैसेज पार्ट को छोड़कर 5 क्वेश्चन छोड़कर 145 क्वेश्चन में तुम्हारा कंप्लीट करके आंसर तुमको अनऑफिशियल आंसर की बता दिया, जो कि रिजल्ट आने के बाद तुमको मतलब पता लग जाएगा तुम्हारा अभी कितना आंसर सही हुआ है. जिसका जितना भी सही हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताओ. ओके. थैंक यू.
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, जरूर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।